Okay. So coming to defense technology, the first thing that we need to understand is DRDO, and this is not for the first time we are hearing about DRDO. Even we try to hear about DRDO in space technology also, right? While we are discussing space technology, for example, gote tame ame कहूଥିଲେ ना RTG ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ କି DRDO ସହିତ ଆମର କଥା ଚାଲୁଛି ଦେନ୍ ଆମର ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ରିଲେଟେଡ ତାର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିବାର ଅଛି ଦେନ୍ related to any kind of missile systems, right? Defense related, those will be taken care by which department called DRDO. ଯେମିତି ISRO ଥିଲା for what? ISRO is for space technology. Here also we are going to talk about DRDO for defense technology. Okay, so this DRDO was established in 1958. It was under Department of Defense Research and Development under the Ministry of Defense. So this is nothing but Department of Defense Research Development Organizations. Okay, so it was enhancing self-reliance in defense system and undertake design development leading to production of world-class weapon systems. So what is the main functional unit of DRDO? Basically, their main functional work is they have to make world-class weapon system. They will try to make in India weapon system, right? So this is what DRDO will try to look after. So as per the requirement for three defense service, what are the three defense service? Air, Navy Air Force Army. correct. So for land we have army, for water we are having navy, and for air we are having air force, right? Okay. So DRDO has a network of 50 laboratories working in various areas of defense technology. It is provides ample spin of benefits to the society at large, thereby contributing to the nation building. So basically, from the national security perspective, for the weapons related perspective, for the defense technology perspective, the most important organization for India is DRDO, which got established in 1958, and it is under Ministry of Defense. Clear? Okay. Now, coming to types of missiles. So, there are different types of missiles. So, first we will try to talk about ballistic missile. Okay. Now, the name itself, ballistic missile, it is a rocket propelled. Now, rocket technology you already know how the rocket works, right? Basically, space technology ଆମେ rocket ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେଗୁଡା ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଯାଉଥିଲା ସ୍ପେସ୍ କୁ ଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଥର ଗ୍ରାଭିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଅର୍ବିଟ ରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା that is fine, that is a different thing. But here what we are trying to say is as like as rocket, like जो थे कि different different propulsion ଥାଏ, right? ଯେମିତି ଆମେ SLV, ASLV, PSLV, GSLV तार सब different different propulsion module थिला, right? तो ସେଥିରେ similarly in case of rocket like missiles, right? Missiles are also rocket propelled. That means there are different kind of stages. those stages रे हमें solid propellant या फिर other kind of propellant we used to generally what we use is solid propellant. Okay, kahinki solid propellant, what is the necessary of the solid propellant in science and tech? Like when we try to talk about nuclear technology, sorry, not nuclear, space technology, we understood why we require solid propellant to give a better thrust, right? ताकि starting तो उठिया ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଦରକାର ନା solid propellant, and ଆମକୁ ରକେଟ କୁ ମଝିରେ ଏପଟ ଏପଟ କରିବାର ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ମିସାଇଲ କୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି and ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, then we don't require any other kind of propellant. and ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମକୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି କୁଆଡେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଟାର୍ଗେଟ ରେଞ୍ଜ ବି ସେଇ 5000 7000 10000 ଏଇ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ या फिर 1000 500 200 ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ରାୟୋଜେନିକ वाला इंजिन मते दरकार की दरकार नहीं ना. Okay. So a rocket propelled self-guided. This is again another important. Self-guided means it has its own navigation system. कि rocket रे निजर navigation system अछि ताको तमे coordinate दे दियो से सेठी की पहुंच जियो. And this is called strategic weapon. Even I told during the nuclear technology, right? There is a two different thing. One is called strategic weapon. One is called tactic weapon. So strategic weapon पाई decision किए नबा दरकार political leader. Is that clear? Sir. Tactic, because strategic weapon. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I told there are two kind of weapon, right? One is strategic weapon, the other one is called tactical weapon. So tactical weapon, who can take the decision? Even the military can take the decision. But this is a bigger weapon. For example, talk about atom bomb, talk about hydrogen bomb, talk about any kind of nuclear bomb. These, if you try to execute, who has to give the decision? The decision should always come from political leader.
Okay, and yesterday's discussion, I already told why it is should be coming from the political data, from the polity perspective. Anyway, so the strategic weapon system that follows a ballistic trajectory, and this ballistic trajectory is nothing but a parabolic path. Is that clear? So if you see this trajectory, right? What is trajectory? Basically, whenever you will try to send one rocket, okay, if that is a ballistic missile, how it will start? Let's suppose from this point, it has to have an angle, or is it 90 degree? Generally, it is in angle, right? If you see from the ground surface, it is making an angle, not exactly 90 degree, right? যদি 90 degree କରିବ generally physics ର concept କଣ କୁହେ 90 degree ଗଲା ଉପରକୁ then energy zero ହେଇଯିବ then again fall down କରିବ because of gravity ହଁ କି ନାହିଁ but if I will try to give a certain angle, how it will do? It will make a parabolic path. Because of this parabolic path, this is what we are trying to tell about its trajectory. So trajectory is nothing but what is the path of this missile? How it is going to hit the target? This is what we call as parabolic path or ballistic trajectory. Generally, in case of ballistic missile, what happens? Up to this highest point, okay, up to this highest point from this point to this point, let's suppose this is the highest point, after that it starts declining. That means from here to here you require energy. Is that clear? जो प्रोपेलेंट एनर्जी हमको दरकार ये जो एनर्जी देखो ये जो एनर्जी को लूज करूची आ भीतर तो एनर्जी थिबो सॉलिड प्रोपेलेंट वगैरह से गुडा लूज कला परे आपको गोटे थ्रस्ट मिलियो सेही एक्सीलरेशन जाए मते को जाए जीवा दरकार up to highest point. So our navigation will be till this highest point. Ballistic missile रो highest point जाए तो मैं navigate कर परियो. Once से highest point रे पहुंच गला परे तापरे से by gravity से fall करियो. Is that clear? It will fall by gravity. See same concept. बर्तन मु जदि गोटे बॉल को एठू नै कि फोपाडिली करेक्ट नो देन मु जो एनर्जी ताकू देली से एनर्जी ता ताकू एजाय नै जीवो करेक्ट बट मु कहू छी ए पॉइंट रे तार एनर्जी जीरो नै स्टिल ता पाखरे एनर्जी अछि सेही एनर्जी एंड ग्रेविटी लागि बर्तन से एनर्जी सफिशिएंट नो ग्रेविटी को बैलेंस करिया पे बुझियो ना बुझियोनी मु कहू छी एठी एनर्जी जते की ता पर ग्रेविटी विल वर्क मोर देन द एनर्जी ग्रेविटी पई जो एनर्जी मिलिबो सेटा जो नॉर्मल तमे आ पाखरे बर्तन जो एनर्जी थिबो ताठू अधिक थिबो बोली से बर्तन तळु को खसिया को स्टार्ट करो दिस इज साइंस सिंपल साइंस वाला कांसेप्ट मु कोन कहली लेट सपोज एट ए पॉइंट एठी जदी मु कहबी एठी कोन हबो आ ठीक ग्रेविटी लागु जे बट मु गोटे ताको फोर्स भी ए डायरेक्शन रे देछि तो एपटर एनर्जी लेट सपोज एपटर एनर्जी x एपटर एनर्जी y तो कहार एनर्जी अधिक अछि x रो जोथि बैंक से ऊपर को चलिबो करेक्ट नो बट एई पॉइंट रे बर्तन कोन होछि ना आठू जदी मु टिके आगु को जिबी यार एनर्जी बर्तन एपट को ग्रेविटी एपट को बर्तन ये जो ग्रेविटी रो एनर्जी विल बी मोर देन दिस एनर्जी जोथि बैंक तकु धीरे धीरे तार ट्राजेक्टरी कोन हबो तळु को खसिया लागो इज दैट क्लियर ओके सो तो मु कोन कहली कि हमर जो नेविगेशन बैलिस्टिक मिसाइल अप टू द मैक्सिमम हाइट वी यूज्ड टू डू द नेविगेशन बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट विल स्टार्ट फॉलिंग सो ये तापरे कोठी हमर जो कंट्रोल रहइबो को जाय ना कंट्रोल रहइबो मिसाइल ऊपर अप टू द हाईएस्ट पॉइंट but after that highest point because of the gravity we cannot do anything it will try to hit the target okay so this is what we called self guided and this self guided is up to the highest point okay then the next one it is a strategic weapon system that is ballistic trajectory to deliver a payload from its launch site to a predetermined target कि आगुरु तमे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी डिफाइन कर देइतो तो से कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करिया पहिले फॉर एग्जांपल भाबिनियो मते एठी पकेबार अछि देन मु कोन करबी मु मे बी ट्राजेक्टरी को छोटो कर देबी हां कि नहीं बिकॉज़ मु जानि छी से कोऑर्डिनेट मोटू केते डिस्टेंस अछि देन मु एठी जानिबी कि मते केते एंगल रे छाडिया को पड़िबो और केते प्रोपेलेंट देबी ताकि से आराम से जाके एठी हिट हेजो मते वर्तन एठी पहुंचबार अछि तो मु कोन करबी मु ताको आउटी के ऊपर को देबी एंड से जाके एठी हिट करबो बुझियो ना बुझियोनी so based on the target location we need to have the propellant and the angle basically we require the angle कि को angle रे मो प्रोजेक्शन करबी ताकि मोर गोटे रेंज this is what we called range this is what we called height okay maximum height is this and this is what we called range मते को रेंज रे ताकू पठेबार अछि तो इन फ्यूचर जदि मो कहबी कि 500 किलोमीटर रो रेंज दैट मींस फ्रॉम स्टार्टिंग लॉन्चिंग पॉइंट टू द टारगेट वेयर इट इज गोइंग टू हिट तो ता भीतर रो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 500 किलोमीटर इज दैट क्लियर okay so Yes, sir. here we are saying this ballistic missile can carry a conventional high explosive. This is what we called payload. In see this payload, even we are not hearing for the first time, right? Even payload, we understood it from the perspective of space technology. Space technology the payload कौन थिला?
लैंडर थिला रोवर थिला सैटेलाइट रो से जो सैटेलाइट काम करे से सैटेलाइट ही गोटे रॉकेट रो पेलोड हो जाउतरा हां कि नहीं देन से जो लैंडर रोवर रे डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट थिला हमें कहते लैंडर रे पांचटा पेलोड अछि करेक्ट नो या फिर रोवर रे तीनटा पेलोड Isa. अछि chassis वगैरह, right? So those are the payloads we are talking in case of space technology. But here the payload will be nothing but conventional high explosive material. Bomb bomb is considered to be one of the payload, right? So this can be chemical, this can be biological, or this can be nuclear. That payload also sometimes these explosive that we consider as munitions, nuclear munitions. Okay, so this is what how it looks like. This is the launch slide, and if you see, this is the trajectory. Okay, and this trajectory it will try to come and hit. So up to here, the second half by gravity. That's what I am saying. The first half it will be like automatically we have a control, but after the second half means top position में पहुंच गला पर जो second half start हुआ that will be controlled by basically the gravity. Okay, now if you see, let's suppose there is a radar, and radar in the sense they used to do what we already talked about radar system, right? Radar system Transfer करिवे signal ଆଉ receive करिवे signal. transfer kariye signal and receive kariye signal. Basically, they will try to emit the signal. And what kind of signal? That will be a radio wave. Correct? No, or basically we can say electromagnetic wave. Now the thing is, suppose भाबिनियो जदि मु पूरा ए अर्थ रो पूरा कररे छाडी देकी पूरा एठी की नै जिबी and मु एमिति बुले की नेबी कोउथिरे डिटेक्ट बाय द radar is more ऊपर से ऊपर because parabolic trajectory motion. बेसिकली एठू जदि तुम देखियो जदि ये जो राडार रो साइन अछि राइट ये राडार रो जो साइन अछि लेट सपोज भाबिनो दिस इज ए सैटेलाइट राडार जोटा की बर्तन ट्राई करूची ऑब्जर्व करिया तो बर्तन कोन हबो लेट सपोज देयर इज ए सैटेलाइट हियर इट इज ट्राइंग टू सेंड सिग्नल राइट कम्युनिकेशन तो ये कोन कला छाडीला गोटे रेडियो एक्टिव सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भाबिनो बर्तन तमरो मिसाइल टा एठी पहुंची देन एठी कोन हबो ए मिसाइल देरे बाडे हेला पर से गोटे रिटर्न सिग्नल टे आसीबो का बाकू राडार बाकू सेइठू से माने जान देबे कि भाई आकाश रे किछु गोटे तो अछि देन आउट के आगु गला एठी भी बाडे हे कि पुनी रिटर्न आसिला देन से माने जान देबे कि बिकॉज़ एठी डिटेक्ट होबार पॉसिबिलिटी बहुत अधिक दैट मींस द बैलिस्टिक मिसाइल the more chances that it will be detected by the radar. But this kind of missile which we used to consider as cruise missile, I will talk about cruise missile. Okay, so cruise missile सी ए path follow ही करिवनी से पूरा जमीन रो parallel रे चलियो and बहुत close proximity. Let's suppose this is my surface, right? Earth रो surface मु कहूची से मिसाइल पूरा एमिति चलियो and भाबो याकू कोठी radar टैकल करि परिबो जना पड़ला कि मिस ही हे गला and जदि यार स्पीड में बहुत जो अधिक करे देबी like we'll talk about difference of speed. Basically speed of sound we consider that 1 mach mach. Okay, speed of sound. So there are like 7 mach, more than 5 mach we consider. You might heard about no subsonic, supersonic, hypersonic. What sonic na sonic? Sonic means speed of sound. Okay, and speed of sound jodi less than 1 mach, like speed of sound ru jodi less achi, that we consider as subsonic. 1 mach ru up to 5 mach we are considering like supersonic, and 5 mach ru adhika means jodi gote travel karuchi gote object, let's suppose missile, jodi gote missile travel karuchi more than 7 times of speed of sound. So mach means speed of sound. Mach means speed of sound. This speed of sound we are defining it as mach. Mach means if I am saying 7 into 7 mach means 7 times speed of sound. This is what we call. More than 5 means hypersonic. Me बहुत fast is that clear? So what we try to discuss here is ballistic missile, the possibility to detect by a radar, the chances will be more than the cruise missile. Because if you see cruise missile, a point जाए तो तमे detect ही कर परिवनी up to here. And एई टाइम रे एते फास्ट से जीव जाय कि डिटेक्ट कला भीतर से टारगेट को हिट कर देथिबो किंतु भाबो एई पॉइंट रे तमे बर्तन डिटेक्ट कर दबो देन एई पॉइंट रो से माने कोन करियो गोटे एंटी मिसाइल छाडीबे आकू डिस्ट्रॉय कर दा भाई मींस मिशन सक्सेसफुल होबार रेट कम. क्लियर? बट जदि मु कहबी कि क्रूज मिसाइल मु छाडीबी भाबो डिटेक्ट हैला से टारगेट एरिया पाखरे जेतेले डिटेक्ट है कि तांग पाखु सिग्नल आसीओ से माने ताकू ब्लास्ट करिया कला बेळु कुही से जाकी पहुंच जाइथो जागा मु बुझियो ना बुझियो नि. चलो नेक्स्ट कांसेप्ट इज
Under the guidance of Dr. Kalam, India developed several ballistic missiles as part of integrated guided missile development program. We'll talk about this IGMT maybe at the end of the today's discussion. Okay, so what I'm saying, give me a second, I'm rejoining. Okay, am I audible? Yes, Yeah, sir. my laptop is connected to a different network, internet. Let me connect to my iPad also to same network. Any doubt till I connect to the other network? Any doubt? No, sir. So ballistic missile detection range, parabolic path, all are clear, right? So now we'll try to talk about different types of ballistic missile ଆଉ ତାର ନାଁ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି। I'm audible again, right? Yes, sir. You are audible. So now the concept will come. We understood this parabolic path and all, right? Next, ballistic missile and their types. So the types will try to segregate between different options. One is surface to surface, means land रहीकि तमे ट्राई करछो गोटे एरिया को हिट करिया पई जोटा अगेन गोटे लैंड, दिस इज व्हाट वी कॉल सरफेस टू सरफेस। द सेकंड वन इज लाइक सरफेस टू एयर, मींस लैंड रू लॉन्च करिवो किंतु एयर रे गोटे जिंस अछि ताकू तमे अटैक करिया चाहतो, सो योर टारगेट पॉइंट विल बी एयर बट लॉन्चिंग स्टेशन विल बी from the land. Then air to surface means your target will start from air, sorry, launch will be start from air but target will be at the surface. That means तमे launch station केमिति करिवो ताको, तमे गोटे रॉकेट नेकी लाइक गोटे एरोप्लेन नेकी जीवो, नॉट एरोप्लेन बेसिकली तमु गोटे एयर फोर्स रो जो डिफरेंट डिफरेंट अछि जेट, राइट, फाइटर जेट, सेथिरु तमको मिसाइल लॉन्च करे पड़ियो। दैट मींस वी आर गोइंग टू टेल अबाउट इज एयर टू सरफेस। इज दैट क्लियर? Surface to surface, surface to air, air to surface. Okay. Next, now talking about the first category, which is called surface to surface. So that will be defined based on the different ranges. So what is range? Range is nothing but from this point to this point, right? From source to the destination. Jetiki distance taku ame kote range. So on that we are defining again based on the range. We are having short range, we have intermediate range, and we have intercontinental ballistic missile, means very far. Okay, means a larger range. Okay, so based on ballistic missiles types रे आमे डिफाइन करूचे कि तीन प्रकार रो ताको आमे ट्राई करिया पढिया पय, गोटे सरफेस टू सरफेस, गोटे सरफेस टू एयर एंड एयर टू सरफेस। क्लियर? These are the three, that's what I mentioned: surface to surface, surface to air, air to surface. Now coming to surface to surface, we are having based on the range, we are having short range, we have medium range, and we are having higher range. Based on short range, we are having a missile name that is called Prithvi. So anything related to Prithvi means pura jamin pakhre, right? Prithvi. तो तमे मन रख कि पृथ्वी होज गोटे शॉर्ट रेंज। ओके, कि पूरा पाखरु पाखरु तुमको टारगेट करिया एंड देखो किलोमीटर 150 किलोमीटर, ठीक अछि ना? 250 किलोमीटर पृथ्वी 3 टिके एनहांस 350 केजी रो एक्सप्लोसिव मटेरियल तमे करतला। से एक्सप्लोसिव पेलोड कैन बी न्यूक्लियर मुनिशन आल्सो, करेक्ट? नो, न्यूक्लियर बम भी तमे पठै दी पारो। ओके, सो 1000 केजी, जदि 150 किलोमीटर 1000 केजी पृथ्वी 1,
पृथ्वी टू 250 किलोमीटर 500 kg. See, we don't require to understand all this, but only the thing is at least Prithvi we should know, and whatever is in news that at least we should know. For example, Ogni 5, we should know the range, we should know the payload, we should know how it is going to launch, and what are the different propulsion module, right? कि solid stage केतेटा अछि कोन से सब दिन हमको देखिया पड़ो जो गुडा recent news रे अछि. Okay, so coming to this short range, again पृथ्वी 1 150 रु 1000 kg, then पृथ्वी 2 250 किलोमीटर and 500 kg, but पृथ्वी 3 again enhanced 350 किलोमीटर and 1000 kg. Then there is also called one called Agni 1, which was like initial phase up to 1000 kilometer से नौथला and 1000 kg. So Agni 1 1000 kilometer 1000 kg, but generally Agni missiles, the name Agni, it will be in intermediate range. Is that clear? So more than 1000 kilometer as a range, we are considering that as intermediate range. Agni 2, 2 for 2000, 3 for 3000, 4 for 4000, 1 for 1000. Any doubt? And 5 for 5000. Hope at least this can be remembered, right? Now it will be cost like remember 2 for 2000, yeah, Yes, sir. 1 for 1000 and 1 kg, 1000 kg, 2 for 2000, 1000 kg. Generally, if you see 1000, 1000, 1000 kg, only in 3 there is 3000 but 500 kg, and Agni 5 1500 kg. We just try to enhance it. Okay, so up to 2000 to 4000 we are considering it as medium range. See, this is behaving as like orbit, correct? No, lower earth orbit, medium earth orbit, high earth orbit. Hangi sei bhaliya ethi ame koche based on surface to surface we are dividing with the different stages, like basically ranges. So say range hochi gote short range, medium range and high range. So high range range hochi intercontinental ballistic missiles, that is considered to be Agni 5, 5 for 5000 km and 1500 kg payload. Then there are some submarine launchable ballistic missiles, means tome submarine ru launch kar docho, बुझी होची ना, means समुद्र भितर अछो, सबमरीन रु लॉन्च करूछो सरफेस को, या फिर सबमरीन रु लॉन्च करूछो आकाश को, एयर को, राइट? इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स सेथिरे आसुची कोन K-15 नोन एज सागरिका, रेंज होची 750 किलोमीटर 500 kg payload, and we have K4 which is having a range of 3000 kilometer and a payload of 1000 kg. Okay, now the question will be, if someone will ask what is Prithvi 2, is it short range or high range or medium range? Short range. Prithvi 1, Prithvi 2, Prithvi 3, 150 to 350, correct? No, Short range. correct. Short range. 1 250, correct? Short range. So if Short someone range. will ask Agni 4, intermediate Medium ballistic missile, very intermediate important range. ballistic. So in future, if there will be a question, right? If I will use Prithvi 1, what will be the possibility of detection in radar? More or less? Ballistic means more only. No, ballistic means more only. If basically we have to see like what we are trying to achieve, basically between Prithvi and Agni. Correct? No, between Prithvi, between Prithvi 2 and Agni 4, we are not talking about. Let's suppose both are traveling in the same speed. So which will have more percentage of detection in the radar? Agni sir. Because तमे देखिलो पृथ्वी तो तार शॉर्ट रेंज, करेक्ट? नो, ए शॉर्ट रेंज भीतर से पहुंच भी जाइथिबो, बिकॉज़ ताको जस्ट पृथ्वी 1 नो 150 किलोमीटर ट्रैवल करियो, बट अग्नि 4 4000 किलोमीटर, दैट मींस लगभग 2000 किलोमीटर जे डिटेक्शन हबनी, एंड एई पट साइड रे जदी डिटेक्शन हे गला, एई पटे भी डिटेक्शन हे परिबो, एमिति नो के पटे डिटेक्शन हबनी बेस्ड अपॉन द राडार, राइट? कि राडार कोठी अछि, जणा पडला कि राडार ही एरिया रे नाही, एरिया रे राडार टेक्नोलॉजी ही नाही. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस राडार इज वेरी इंपोर्टेंट. करेक्ट? नो, दैट मींस तम सैटेलाइट सेहि बहुत इंपोर्टेंट. आमे जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट कहउछे, राइट? टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट रे अछि? जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, करेक्ट? नो, high earth. हाँ, हाई अर्थ ऑर्बिट बेसिकली 35786 किलोमीटर, राइट? सेठी अछि. तो से टेलीकम्युनिकेशन जो सैटेलाइट गोडा सेगुडा बहुत इंपोर्टेंट टू डिटेक्शन ऑफ दिस सैटेलाइट, दिस मिसाइल्स काइंड ऑफ थिंग. ओके, जदी तमरो सेटअप फेल हेगला, जणा पडला कि भाई आउ किछि काम हे करूनी, आसी गोटे सिटी ही ध्वंस हो गलानी. ओके, सो the types are surface to surface, surface to air, air to surface. So this is what it shows like Sagarika or K4. Is that clear? Submarine रो तमे छाड़ देलो एंड से जाई कि कोट हिट कर.
anyway and जदि एटा गोटे आइलैंड हेतिबो दैट मींस इट विल जदि आइलैंड गोटे अछि जणा पडुनी धुआं धुआं हे जाई चारिआडे जदि आइलैंड गोटे हेतिबो देन एटा हेतिबो सरफेस टू सरफेस नेक्स्ट अग्नि 5 व्हिच इज इन न्यूज so we'll talk about different technology MIRV okay so what is MIRV it is considered to be multiple independently targetable re-entry vehicle मारी देखि पुणी रिटर्न पळे आसीबो दिस इज व्हाट कि ए गोटे मिसाइल से जीवो तमे देखि ना गोटे गोटे पत्थर जो पानी रे जो तमे गोटे पूरा पानी को पाख करके जदि तमे छाड़ीबो केबे देखिछ पोखरी रे से तमे गोटे पत्थर को जदि छाड़ीबो से गोटे रे आग बाजिबो देन उठिके आ गोटे जगह रे जंप करिवो देन आ छोट बेले तो करदिबो कि Yes, sir. नॉर्मली तमे जस्ट टेकाटे फोपाडी देला जाई गोटे जगह रे पइला हेटी बुडी ही गला देन मु कहूची जदि ताको तमे पैरेलली पूरा छाड़ीबो पानी रो माने बेसी एंगल माने बेसी प्रोजेक्शन दबनी व्हाट आई मीन टू इज कि मु एना टेकाटा को एमिति न मारी कि मु ताको एति की लो रे मारिबी तो से कोन हबो ए पानी रे बाजिबो देन हेटू उठिके आ गोटे जगह को जीवो हेटू उठिके आ गोटे जगह को जीवो तापर जोटी ता Sir, तो सेठी डुबी जीवो करेक्ट नो Malinga style bowling रे. हाँ करेक्ट so similarly what we are saying here in case of ballistic missile we are calling as multi warhead so एगुडा को गोटे गोटे हमें कहउचे warhead so जदि से डायरेक्ट आसी कि गोटे टारगेट रे हिट करके सेठी ही शेष दैट इज कॉल्ड सिंगल warhead जदि मु कहबी कि नहीं सेठी अटैक कला देन सेठू जाई आ गोटे जगह अटैक कला सेठू जाई आ गोटे जगह अटैक कला दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल ऑफ warhead इज दैट क्लियर Sir, गोटे प्लेस रे अटैक कला माने सेटा माने डिस्ट्रॉय हे जाउथबो ना से पुनी अलगा जगह को केमती सेतरे जदी जो पेलोड थिबो सेटा करला पर सेटा तो जाई कि सेई जगह रे टारगेट डेस्टिनेशन पॉइंट रे कि माडो होथबो ना करेक्ट तो सी एटा मु सेया कहूनी कि सी पूरा जाई कि एठी बाडे कि माने तमे ताकू पूरा एग्जैक्टली कहंती माने से जो टेका कथा गोटे टेका बर्तन भांगी जीव स्पेस रे गोटे सैटेलाइट अछि से सैटेलाइट रु पांचटा बाहरिबो बर्तन वारहेड से जाई कि पांचटा डेस्टिनेशन कवर करबो बुझियो ना बुझियो ओके सही है सर so generally consider these are something called warhead but don't consider like exactly as like से जो पत्थर वाला concept कि हां गोटे रे बाडे हैला देन आ गोटे जगह बाडे हैला जाई कि आ गोटे मु कहूची मल्टीपल warhead जो गोटे सैटेलाइट रो सामना रे जो पोर्शन ता थाए ताकू हमें जनरली हेड कहू करेक्ट नो जो थरे कि जदि सैटेलाइट को बेसिकली रॉकेट रे जदि स्पेस टेक्नोलॉजी रे हमें देखबे सेही हेड रे हमें कोन रखू पेलोड and that payload can be a satellite or it can be like a orbiter or lander rover correct no so jodi multiple warhead achi this is how it will look like okay anyway let's discuss then we will understand so Agni 5 recently advanced version of Agni 5 tested greater thrust okay we'll talk about this advanced version of Agni 5 first let's try to understand what is Agni 5 so we know Agni 5 it is called intercontinental ballistic missile clear range is 5000 payload is 1500 kg correct that means 1.5 ton of nuclear warheads it can be nuclear it can be biological weapon or it can be chemical weapon so in warhead anything can be there right biological chemical and nuclear and yesterday I talked about NPT correct no okay इंडिया रो न्यूक्लियर पॉलिसी वगैरह भी हमें yesterday डिस्कस करके कि आम ऊपर जदी किए को भी टाइप रो अटैक कला इट कैन बी बायोलॉजिकल वेपन इट कैन बी केमिकल वेपन और इट कैन बी न्यूक्लियर वेपन द आवर रिटेलिएशन विल बी it can be nuclear weapon if consider that जो country attack कर दी ये nuclear power ही even nuclear correct so India's first intercontinental ballistic missile that is called Agni 5 it has a 3-stage surface to surface missile that use solid propellant clear because ताकू greater thrust दरकार because से 1500 kg रो substance को नहीं की जीवो and नहीं कि केते किलोमीटर जीवो भाई 5000 किलोमीटर जीवो that means मते solid रो जो propulsion दरकार मते एक रे तो fuel बहुत दरकार करेक्ट नो जदी fuel हबो ताहाले इन से नहीं की जाई परियो सो सेति भाई solid propellant यूज करे केते ना तीनटा स्टेज रो solid propellant it can carry 1500 kg or 1.5 ton nuclear warheads with a target range of 5000 km it can attain a speed of 24 Mach means 24 times of speed of sound is that clear 24 Mach means kete fast जाउथो भाबो unlike other missiles of the series Agni 5 is the most advanced in terms of navigation and guidance means in terms of navigation ता warhead रे जो तमे navigation unit वगैरह लगाउछो GPS वगैरह लगाउछो that will be very advanced so it will have better navigation guidance it will have better warhead and engine also and it can hit the target with high precision because of high navigation and guidance in terms of advanced navigation and guidance
the precision coordinates will be very high. Correct no कि मते जाय कि जो कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल मु कहबी 2.534 डिग्री नॉर्थ रे अटैक करियार अछि या फिर गोटे नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट दे दिली आ गोटे ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट दीटा कोऑर्डिनेट है सफिशिएंट राइट बिकॉज़ द सरफेस प्रेजेंट इन 2D हंगी नहीं बट मते जदी सरफेस टू एआर करिवार अछि दैट मते केतेटा कोऑर्डिनेट दरकार तीनटा कोऑर्डिनेट बुझियो कि ना बुझियो तो बेसिकली से जो कोऑर्डिनेट को कहा को तमे दवा पड़ो से वार हेड है ऑलरेडी दैट इज द मैकेनिज्म दैट वार हेड हैव टू गेट द कप कि मते केते डिग्री रे अटैक करिवार अछि देन कोऑर्डिनेट मु कोन कहली सरफेस रे जदी थिबो फॉर एग्जांपल तमे तम प्लेस रो कोऑर्डिनेट जदी केते गूगल मैप रे चेक करबो देन हेतरे गोटे लैटिट्यूड आ गोटे लॉन्गिट्यूड दबो करेक्ट नो नाउ द सरफेस इज ऑन लाइक अर्थ राइट जेहेतु अर्थ रे अछि दैट इज कंसीडर्ड टू बी टू डायमेंशनल व्हेन आई एम सेइंग थ्री डायमेंशनल दैट मींस आई एम सेइंग लाइक जो तमे पोजीशन रे छ ता ऊपर फॉर एग्जांपल गोटे नडिया गछ अछि करेक्ट भाबिनियो एठी सरफेस रे नडिया गछर जदी मूल रे मते अटैक करियार अछि देन मते दीटा कोऑर्डिनेट दरकार बट जदी नडिया गछर ऊपर जोठी नडिया अछि सेठी मते जदी अटैक करियार अछि मते केतरा कोऑर्डिनेट दरकार तीनटा कोऑर्डिनेट राइट फर्स्ट तो नडिया गछर ई 2D वाला कोऑर्डिनेट प्लस ए जेति की हाइट रे अछि z एक्सिस एठी तो x आ y एक्सिस मिली वाला एठी तुमको z एक्सिस मिली जो तीनटा कोऑर्डिनेट हेले भाबिनियो मिसाइल को मु तीनटा कोऑर्डिनेट देले से एग्जैक्टली जो नडिया को टारगेट करिया कथा सेही नडिया को ही टारगेट करियो भाबिनियो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अग्नि 5 वेरी प्रिसाइज इज दैट क्लियर Okay. So this Agni 5 was test fired in 27th October 2021 from APJ Abdul Kalam Iceland. And where it is? In Odisha. Odisha. Okay. So next, the new version of Agni 5 is called Agni P. But generally, we'll try to understand ki what is the difference between Agni 5 and Agni P. Basically, Agni P is not like as good as Agni 5. Basically, it is lesser than Agni 5. We'll try to understand it. India reportedly has been working to develop multiple independently targetable re-entry vehicle. That is the technology called MIRV, multiple independently targetable re-entry vehicle. It is the sixth missile in the Agni series. 1, 2, 3, 4, 5. Then the P. So P रे नुआ टेक्नोलॉजी कौन अछि MIRV जोटा कि अग्नि 5 रे नै इज दैट क्लियर ओके देन ताले मु काहे कहली अग्नि P जदि देखियो अग्नि P रो रेंज इट इज नॉट 5000 इट इज 1000 to 2000 दैट मींस इट विल बी कमिंग अंडर व्हिच कैटेगरी इंटरमीडिएट रेंज होंगे नहीं अप टू 1000 वी आर कंसीडरिंग दैट एज ए लोअर रेंज more than 1000 जेतले अग्नि 2 कथा कहले दैट इज 2000 राइट so 1000 above gala mane intermediate range so the Agni P is the new generation advanced variation of Agni class missile which has what MIRV technology multiple independent re-entry vehicle okay so it is consistorized missiles with range capability between 1000 to 2000 so this canisterization not consist this is canisterization this canisterization of missiles reduce the time required to launch the missile while improving its storage and mobility. So what is this canisterization? The canisterization is nothing but it is a missile which will try to reduce the required time to launch. जो जितकी टाइम ताको दरकार लॉन्च होआ पई ताकू से कमेई दवा launch the missile and improving its storage and mobility. It plugs the range gap between Agni 1 and Agni 2. Agni 1 out 2. Agni 1 1000 km, Agni 2 2000 km. तो ता भितरे आसी जीव Agni P. Is that clear? किंतु Agni P रो एक्स्ट्रा एडवांटेज कोन MIRV टेक्नोलॉजी ओके एंड इट इज डिसेंबर 2021 जदी एठी देखिबो तमे एटा थिला अक्टोबर 2021 देन दी मास परे अगेन से कोन कहले डिसेंबर 2021 DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड Agni P again from what Abdul Kalam Iceland. So Agni 6 that is the latest like which is having a range of 11000 to 12000 km which is under development okay so this Agni 6 what it will have both it will behave as more advanced than Agni 5 as well as MIRV wala technology okay so this is a 3-stage solid fuel as like Agni 5 with maneuver re-entry vehicle MARV that is multiple independent we don't have to go a lot more about what is multiple independent and maneuver means तमे निजे चाहिले ताको कंट्रोल करि पारुथो ओके मल्टीपल इंडिपेंडेंट मींस ताको तमे कंट्रोल करि परिबनी से ऑटोमेटिकली आसीबो and maneuver in the sense तमे ताको कंट्रोल करो कि कोठी अटैक कर दिला पर कोडे पळे आसीबो so it is a maneuverable re-entry vehicle capability that deliver warheads into two separate locations that means multiple warheads होंगे नहीं
दीटा सेपरेट लोकेशन को तुम डिस्ट्रॉय कर दे परिबो with what अग्नि 6 गोटे मिसाइल जीवो दीटा वारहेड दीटा सेपरेट लोकेशन रे पड़िबो so MARV is a type of ballistic missile whose warhead is capable of autonomously tracking ground target कि गोटे माने अग्नि 6 जदी जोटा अंडर डेवलप अछि जहार टारगेट रेंज होची 11000 रु नै कि 12000 बर्तन मु कहूची एथिरे दीटा वारहेड जाउची एंड ए वारहेड पाखरे निज निजर कोऑर्डिनेट्स अछि स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट से माने ऑटोमेटिकली जाई कि से नेविगेशन करी कि से कोऑर्डिनेट को जाई कि डिस्ट्रॉय कर दे कि देन ए जो मिसाइल टा छाड़ी थिला वारहेड को सेटा रिटर्न पळे आसो री एंट्री व्हीकल इज दैट क्लियर ओके सो कैनिस्टराइजेशन द मिसाइल इनसाइड ए बॉक्स बेसिकली गोटे कैन भीतर तुम पुरे की रखिबो ए मिसाइल को काहे कि हम कहली कि ये रिड्यूस कर देबो टाइम लिमिट फॉर लॉन्च बिकॉज़ आकु नबा पाई इजी फॉर एग्जांपल गोटे जिनस बाहर एमती खोला बोला पड़िथिबो देन सेठु लीकेज वाला चांसेस अछि किछि जणा नाही एंड हठात गोटे बॉक्स भीतर रेडी हेकि अछि जनरली तमे को गोटे जिनस नै कि जीवो गोटे अलगा जगह को राइट देन ताकु तमे पैकेजिंग करछो राइट कैनिस्टराइजेशन मींस ऑलरेडी ये पैकेज भीतर ही अछि सो दिस इज अ मिसाइल व्हिच इज इनसाइड द बॉक्स so that it can be stored safely one missile accidentally fired to Pakistan that can lead to war correct no जदि कथा होची ऑलरेडी ये कोथिरा अछि गोटे स्टोर हेकि अछि ताकू इन मिस फायर तो हबनी करेक्ट नो जदि ये ऑलरेडी स्टोर हेकि अछि एथिरे निया लागिवार चांसेस मु कहूची नाही एंड जणा पडला कि गोटे मिसाइल अछि हठात किना फायर हे गला सम हाउ एंड पळै गला एमिति गोटे लोकेशन जाय कि पाकिस्तान रे पळला देन तांकू को लागियो कि भाई अटैक हे गला हम ऊपर एंड आवर सोवरेनिटी ब्रेक हला वार डिक्लेयर करबे ट्रू okay so what is the advantage there should not be any accidental misfire that is the advantage early to easy to store ताको आराम से तमे स्टोर करि परिबो and you can have a faster launch this is what we call canisterization of missile and this where we are trying to use agni p or 6 p right agni p रे हम ट्राई करछे एटा को यूज करिया पे agni p canisterization okay any doubt hope it is clear right ballistic missiles any doubt in ballistic missile so in ballistic missile I can just summarize what we discussed is based on surface to surface we try to understand short range medium range and intercontinental right intercontinental ballistic missile let's suppose short range we talked about prithvi 1 prithvi 2 prithvi 3 Agni 1 then agni 1 here medium range agni p agni 2 agni 3 agni 4 4 and ICMB रे हमें कौन कहूचे Agni 5 Agni P Agni 5 Agni Agni 6 in future Agni 6 this is in development stage okay then au hoji submarine related sagarika K15 K4 okay so these are the things that we try to understand so in future whenever the name comes Agni and all you should be very familiar like okay and what I will say is you just try to write like this only okay don't write like this because already in the mains I showed you once right ki mains re se mane कहउछन they don't want this Roman style of writing right these are Roman numbers 1 2 3 don't try to write it if you can write a Agni 3 also like this that is also self understood right so try not to use any kind of symbol during your mains writing or anything okay don't write any like it can be a point or anything but don't write any kind of this Roman numerals okay you can try to use A B C D that is fine or 1 2 3 4 like new Indian numerical they don't want so unnecessarily you will be having attention towards the penalty okay so don't try to lose the penalty over there okay anyway coming to cruise missile so I told ballistic missile because it is going ahead like upur ku jauchi then tolu ku asuchi to ei time re radar ro detection it can go for a easily and it can be caught so enemy's radar can easily detect which missile basically jodi ballistic missile jodi asuchi then se जान देबे कि भाई गोटे ballistic missile asuchi जोटा कि radar रे caught हे गला बट जदी radar को तुमको penetrate कर दबार अछि penetrate in the sense radar धरि ही पारुनी तुमको radar छुई भी पारुनी सो ताहले तुमको से भलिया मिसाइल दरकार जोठी कि तुम टारगेट को सक्सेसफुली hit करके destroy करि परिबो so now the point comes here is cruise missile this is navigated throughout the journey you understood the difference between navigated up to in case of ballistic missile the navigation is towards what up to here up to the highest point
means in the first half you are doing a proper navigation, but the second half is guided by what? Gravity. But cruise missile is navigated throughout from the launch to the destiny. Is that clear? And this radar location parallel to, because its location is, if this is the surface, right, then ये जो मिसाइल जाउची ये पूरा पैरेलल टू ग्राउंड जीवो, एमिति किछि ऊपर को तळ हबनी, जेहेतु ऊपर तळ हबनी राडार रे आसीर चांसेस बहुत कम, and पूरा ग्राउंड लेवल रे जीवो, so hence may not able to detect, so radar it may not able to detect. So these missiles don't follow the laws of gravity, it won't follow the laws of gravity. तो मु कहबी कि हठात एमिति जीवो माने से धीरे धीरे एमिति तो ट्राजेक्टरी फॉलो होई जाय कथा, काहे कि बिकॉज़ ट्राजेक्टरी केतळे फॉलो हो जेतळे ग्रेविटी अधिक ताको भिडीबो तळକୁ, हां कि नहीं? So these missiles, these cruise missiles, they don't follow the laws of gravity and their path is controlled throughout their journey period. These missiles are self-navigating and fly at extremely low altitude. This is altitude, right? Height को generally हमें कहते हैं altitude. So it fly extremely low altitude, माने बहुत close toward the surface to avoid being caught by the radar. Level of accuracy in this missile is extremely high, not like ballistic, because ballistic रो हमें अधा जाए control करते हैं, तापर से automatically पड़ुची, correct no? बट एई ऑटोमेटिक ही भाबिनियो से सब ऑलरेडी फिजिशियन जो माने अथै से माने जानजन कि ग्रेविटी केते लागिवो, मास केते अछि, से को जाय जाई परिबो, ओके, से सब कैलकुलेट करके से माने से एंगल रो प्रोजेक्शन दियंदी एंड सेति के अमाउंट रो मास भी देथांती, फ्यूल मास, ताकि से टारगेट को हिट कर पाए. बट हां, बिकॉज़ थ्रू आउट द मिशन हमर नेविगेशन नहीं जोथि बेंगे आर प्रिसाइजन मे बी एपट अपट पारे, बट बिकॉज़ this cruise missile you are navigating from launch to the destination, throughout the journey you are doing a navigation कि कोठी की जीवो, even last point रे hit कला जाय तमे navigate करि परियो. That means it will have very high level of precision. Is that clear? Okay. And these are not bigger or larger missiles, right? These are very small missiles, so these are also called to be tactical missiles, and these you don't need permission from the like political leader. Even army can take their own decision and they are used in the battlefield. Is that clear? Cruise missile used in battlefield, but in case of ballistic missile we require permission from the political leader, because it is going from one continent to another continent. It can hit like what you can say, like one whole city itself, right? So that's why cruise missile. Now these cruise missile, as like ballistic missile, how we are segregating them? Based on the range and based upon the mode of launch, surface to surface or surface to air or air to surface. Similarly, here we are trying to differentiate these cruise missile based upon their speed. So speed in the sense, one is called subsonic cruise missile, supersonic cruise missile, hypersonic cruise missile. Is that clear? Okay. Coming to sonic. Sonic I already told, this is nothing but sound of speed of sound. Okay. जोटा कि हमें कहते 1 Mach means speed of sound. Subsonic means less than the speed of sound, which is less than 1 Mach. Supersonic means speed which will be more, basically more than 1 Mach but less than 5 Mach. But hypersonic means speed generally greater than 5 to 6 Mach. Now coming to subsonic, speed could be what? Less than 1 Mach. So generally we have a name called Nirbhaya. See, now don't get confused with Prithvi, Agni and Nirbhaya. By Prithvi, Agni, those are big items, right? Prithvi goda Birata boda means ballistic, right? Agni again jana nahi bahut boda, right? So Agni, Prithvi, ये सब जिन जेहेतु माने माने मु कहू कि लाइक केमिति डिफरेंशिएट करि परिबो. निर्भय मीन्स गोटे किछ गोटे अलग जिंस, राइट? इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वाटर, अग्नि, एयर, राइट, अर्थ से सब नुह. तो सिग्या आ पई तमे सेपरेट ही नियो. निर्भय मीन्स क्रूज मिसाइल एंड इट इज वेरी स्मॉल. लाइक जो स्मॉल माने कोन, बेसिकली यार रेंज होची 750 रु 1000 किलोमीटर. जदी देखिबो पेलोड केते नोची ना 500 केजी, करेक्ट? बट कथा होची कोन ना स्पीड केते यार ना 0.7 में. क्लियर? Okay. Next, the next one is called BrahMos. Okay, we'll try to understand one by one. We'll try to see what is Nirbhaya, what is BrahMos, what is BrahMos 2. Okay, so next one is called supersonic, means speed more than 1 Mach. Correct? No, and generally we consider like supersonic more than 2 Mach. So here the for BrahMos it is Mach is 2.8 Mach. रेंज केते ना 290 एक्सटेंडेड टू 450 एटा हम कहिबी बिकॉज़ ब्रह्मोस रो गोटे नुवा वेरिएंट अछि. बट जनरली होची 290 किलोमीटर मींस बहुत पाखरे किंतु बहुत फास्ट, स्पीड अधिक एंड नै कि जाउची केते पेलोड 300 केजी. हाइपरसोनिक
टू फास्ट 7 मैक बट अग्नि रो केते थिला 24 मैक अग्नि 5 करेक्ट नो ballistic missile अग्नि 5 24 मैक हियर क्रूज मिसाइल 7 मैक सी बहुत फास्ट जदी जीव ताकू कंट्रोल करिया बहुत कष्ट करेक्ट नो सेति में कोआ ना गाड़ी को स्पीड कंट्रोल 60 भीतर रखो ताकि तुम कंट्रोल कर परिबो एंड थ्रू आउट द जर्नी वी नीड टू कंट्रोल दिस मिसाइल्स राइट एंड एमिति रो कि आको अग्नि 5 बळे हमें 24 मार्क नै कि जिवा नै परिबा कि नेले देन कंट्रोल केमति करबो नेविगेशन को प्रिसाइजन कोऑर्डिनेट तो मो केमति लाइक कोऑर्डिनेट रे केमति तुम टारगेट कर परिबो बुझियो ना बुझियो नै गाड़ी स्लो चलेले तुम कंट्रोल रे रहबो गाड़ी अधिक फास्ट चलेले कंट्रोल हरि जिवो राइट गछरे बाड़े हवा जगह कार रे बाड़े हवा या फिर कार रे बाड़े हवा जगह गछरे बाड़े हवा काहे कि स्पीड अधिक थिला जणा ही पड़लानी संगे संगे हैंडल मोड़ देला कुआडे बाड़े हला जणा पड़लानी दैट्स व्हाई the speed if you will see it will be much less than the ballistic missile and here the range 750 kilometer and payload will be 1000 kg hypersonic cruise missile coming to the first one so in case of cruise missile we understood two names basically one is called Nirbhaya the other one is called BrahMos okay is that clear I will tell what is why the name is BrahMos because that was developed by co-developed by India and Russia. तो इंडिया रो गोटे नदी and रशिया रो गोटे नदी जोथि कि से नदी रो ना रो ही ब्रह्मोस थियला. We will try to talk about when we will come to BrahMos. The first one is Nirbhaya. So it is a indigenously developed subsonic missile, subsonic less than 1 Mach. That is the speed. So it is 0.7 Mach. So the speed is 0.7 Mach. It has a range of approximately around 800 kilometers, 750 kilometers you can tell. So it is something considered to be, in case of cruise missile, it is considered to be long range. Okay. So this missile is powered by solid rocket booster and a turbofan. Okay. Now the concept of jet engine will come into picture. Then the first question is, what is this turbofan? So तमे aeroplane तो देखी थी वो, correct? देखी थी ना aeroplane. तो aeroplane से side रे दीटा पंखा लगी था है, गुरुत्व एटी correct? So these turbofans are called air breathing. Means semane air nebe basically nei ki puni air छाड़ीबे. Okay. बट जेतले एयर छाड़ीबे सेही एयर टाको एते मात्रा रे से माने से भीतर कंप्रेस करिवे एंड से कंप्रेशन बर्तन कथा होची एयर से माने काहेंगे नेबे जनरली हमें काहेंगे एयर नोचे बिकॉज़ वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन राइट यस सर सो सिमिलरली बर्तन तमे मते कुह जनरली तमे मु कहिथिन ना लिक्विड इंजन सॉरी लिक्विड प्रोपेलेंट ऑक्सीडाइजर दरकार करेक्ट वी रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजर तमे बर्तन कथा होचे जदी तमे ऑक्सीडाइजर फॉर एग्जांपल एरोप्लेन रे आमे गोटे फ्यूएल यूज करूचे बर्तन हे फ्यूएल रे ऑक्सीजन हेले ही से फ्यूएलटा कंटीन्यूअसली जळियो बिकॉज़ ऑक्सीजन जते अधिक मात्रा रे दिबो सेते मात्रा रे जळे तमे देखिथिबो कि ऑफिस गोडा हला या फिर इंस्टीट्यूशन वगैरह हला सेते माने कोन कहउली फायर एक्सटिंग्विशर रखिया पे फायर एक्सटिंग्विशर रे कोन थाए को गैस CO2 तो CO2 कोन करबो ट्राई करबो निया को लिभेया पई मु सेठी ऑक्सीजन रखि परिबी कि सर अधिक मात्रा रे जळियो करेक्ट सो सेति पई लिक्विड प्रोपेलेंट जेतला हमें कथा होतले हमें कोन कथा होतले लिक्विड H2 एंड लिक्विड O2 लिक्विड H2 एज ए फ्यूएल एंड लिक्विड O2 एज ऑक्सीडाइजर सो वर्तमान कथा हला कि जदी सॉलिड रॉकेट बूस्टर तो जो तार इंजन ताकू काम करिया पई हमें कोन इंजन लगोचे द टर्बोफैन जोथरे कि एयर ब्रीथिंग दिस एयर ब्रीथिंग इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू टेक ऑक्सीजन व्हिच विल ट्राई टू हेल्प इन कंबर्शन ऑफ द फ्यूएल ओके नाउ द कांसेप्ट इज तो ऊपर आमे बर्तन कोन होती ना बर्तन मु कहूची कि प्रेशर करिया पई दरकार प्रेशर काहे कि करिया दरकार फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर बोटे भाबिने स्पेस रे एत्ती कि रे किछि किछि एयर अछि तो सेथि रे जेते ऊपर को जीवो ऑक्सीजन रो मात्रा सेते कमी जीवो होंगी नहीं ओके तो बर्तन भाबो तमे स्पेस को जेतले गलो लेट्स सपोज एयर थ्रू 1000 किलोमीटर ऊपर तमे बर्तन फ्लाइट रे जाउछो जनरली नॉट 1000 बेसिकली नै जाओ 20 किलोमीटर ऊपर तमे फ्लाइट रे जाउछो 10 किलोमीटर रे जेति की एयर थिबो जोथिरे ऑक्सीजन रो क्वांटिटी थिबो 20 किलोमीटर रे सेति की थिबो कि नथिबो आउ एमिति न कि तुमको ऑक्सीजन भी दिया भाई ऑक्सीजन काहे तुम एक्स्ट्रा नबो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर रे अछि किंतु कथाला एटमॉस्फेयर रे जेति की ऑक्सीजन अछि दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जांपल मु बर्तन एति की यूनिट रो एटमॉस्फेयर रो एयर नेले से एयर रे भाबिने मात्र केतरा पार्टिकल अछि 1 2 3 4 5 करेक्ट नो किंतु कथाला जदि मु आको आहुरी कंप्रेस करि देबी बुझियो जी ना याकू कंप्रेस कर देले लेट भाबिने एति की मात्रा रे पळे आला तो सब पार्टिकल उडा पूरा कंप्रेस हेकि थिबे एंड एई भितरे जो पांचटा अछि बर्तन जोठी से एते बड़ जागा नउथिला बर्तन से केते जागा नउची मात्र एति की हंगी नै दैट मींस एथिरे 1 2 3 4 एमिति भाबिनो 20 टा पळे आला 20 5 100 टा ऑक्सीजन रो पार्टिकल आसीबे हंगी नै
तो जोठी मु नॉर्मल विदाउट कंप्रेशन रे मात्र 5टा ऑक्सीजन पार्टिकल पाउतिली एतिकी एरिया को यूज करिकी वर्तमान सेतिकी एरिया रे मु जदी ताको कंप्रेस कर देबी मते केते ऑक्सीजन पार्टिकल मिलियो 100टा व्हिच विल बी बेटर फॉर मी हंगी नहीं बिकॉज मते अधिक रु अधिक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करिवार अछि एयर रु जोटा कि बहुत हाइट रे सेति पय तमे देखुछ जो एरोप्लेन अछि सेथिरे हमर कोन लागि टर्बो फैन इज दैट क्लियर टर्बो फैन सो बेसिकली दैट इज ए रोटरी फैन से फैन जेतले रोटेट करूची से कोन करूची पंखा जेतले आसुची सेतले कोन हबो पंखा सी एयर टाकू सक्शन करिवो जेतले सक्शन करूची सेतले सी कोन करूची एयर टाकू जेतले भिडी नउची भितरे से ताकू ट्राई करूची कंप्रेस करिया पय कंप्रेस करिकी मैक्सिमम अमाउंट रो ऑक्सीजन से पाउची जोटा कि तारो कंबर्सन जो इंजन रे जो फायर होची राइट जो फ्यूल कंबर्सन होची कोथरे एरोप्लेन रे ता पय ऑक्सीजन दरकार से ऑक्सीजन को कंप्रेस करिक आनिले अधिक मात्रा रो ऑक्सीजन ताकू मिली परियो जदी कंप्रेशन न होला ताले ऑक्सीजन अधिक मिलिबोनी तो तमे देखिदिबो ना आमे गोटे पढुथिले प्रोपेलेंटा काम कलानी देन ब्लास्ट हैला हंगी नहीं आमे गोटे इवन गोटे देखुथिले फुकुशिमा वाला रिलेटेड सेतिरे कूलांट काम कलानी देन पूरा डिस्ट्रॉय हैला हंगी नहीं सो भाबिनियो दैट मींस तमे भाबो जदी एरोप्लेन ऊपर उडुची से फैन रो गुरुत्वपूर्ण केते से फैन टा केते गुरुत्व केते इंपोर्टेंट करेक्ट नो जदी से फैन टा खराब हे गला इन केस भाई कंबर्सन हबनी तमो इंजन ही फेल हेजिवो जदी कंबर्सन न होला तो माने फ्यूल जनरेट होनी तो देखि दिबा इंजन जदी खराब हैला जो नॉर्मल गाड़ी रो जदी हठात इंजन बंद हे गला काहे कि बंद हे गला बिकॉज़ फ्यूल ही काम करनी गाड़ी चलीबो कि आगु बिकॉज़ तमे एक्सीलरेट करि परियोनी करेक्ट नो जस्ट ताकू खाली कंट्रोल करिवार अछि इंजन बंद हैला गाड़ी स्पीड जेति कि अछि ताकू कंट्रोल करिकि ब्रेक मारी कुड रखिबो बट कथा अछि एयर एरोप्लेन को केमति रखिबो बिकॉज़ ताकू तो लोकेशन दरकार ना मते टिकट तेढा करिया को पड़िबो कि टिके लेफ्ट को जिवा को पड़िबो राइट को जिवा को पड़िबो ता पय तो गोटे एक्सीलरेशन दरकार ना ता पय तो मते इंजन काम करू दरकार बट फैनिंग काम करू यू अंडरस्टूड राइट why the fan is necessary for aeroplane okay so in aeroplane we used to use this turbofan similarly this turbofan we use in nirvaya okay then this is what we called a air breathing engine it can also launch from multiple platform include aircraft land based vehicles launcher ships or submarines तो तमे देखियो ना कि से जो फाइटर वाला गोटे मूवी देखियो जनरली फाइटर इन द सेंस जो माने स्पेस रे लॉट स्पेस बेसिकली एटमॉस्फेयर रे जतले गोटे फाइटर जेट लेके जाउछनी ताको जेट रु गोटे बाहर कोन रॉकेट भलिया हंगी नहीं से रॉकेट कोन एमिति मूव करे कि ऊपर को जाए कि पैरेलल जाए ना सो दोस आर बेसिकली द क्रूज मिसाइल्स यू अंडरस्टूड राइट दोस आर नॉट बैलिस्टिक मिसाइल्स okay so it can be from aircraft that means air to surface target या फिर air to air target it can be from land to surface basically surface to surface surface to air also or it can launch from submarine also ship that means पानी भितर अछि then तमे ट्राई करछो एयर को हिट करिया पई लाइक एयर रे जदी कि अछि ताकू हिट करिया पई जदी ट्राई करछो then तार ओटे मूवमेंट अलग टाइप रथियो राइट बट जनरली हमें क्रूज मिसाइल जनरली हमें पैरेलल नो करेक्ट नो तो सी एमिति बैलिस्टिक भलिया तो काम दबनी से पैरेलल ही जीवो तो हेई पैरेलल माने एयर भितरे फॉर एग्जांपल समुद्र रे एठी शिप अछि राइट शिप रे किछि डिस्टेंस रे तो समुद्र पानी एठी अछि देन किछि डिस्टेंस ऊपर ही अछि मो सेति कहउछि एटा एयर तो एयर रु एयर को हिट करिवो करेक्ट नो या फिर फाइनली जाई कि गोटे ग्राउंड रे से बाजी कि रहला दैट इज लाइक किंतु पैरेलल जीवो प्रॉब्लम माने आरो मेकानिज्म होछि इट विल गो पैरेलल एंड विथ ए वेरी स्पीड हाई स्पीड लाइक सबसोनिक ताहले हमें ताऊ निर्भय कहबा जदि से सुपरसोनिक ताहले ब्रह्मोस 1 जदि से हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 okay so they can carry a conventional warhead okay conventional warhead and is also said to be a nuclear capable कि सेतिर तमे न्यूक्लियर भी नेकी जाई परियो न्यूक्लियर बम वगैरह नेकी जाई परियो it is capable of deep penetration in the sense radar cannot detect clear means it can penetrate the radar itself radar cannot detect to strike high value targets with precision because very much precision why we are saying very much precision because this cruise missile itself is navigated throughout the journey with sea skimming mean the sense कोन ना एटा जदी समुद्र रो पानी लहडी चलची पूरा ताठू पैरेलल बहुत पाखरे पूरा लाइक ताकू पूरा हॉग करी करी गला हो राइट सिमिलरली वी कंसीडर देयर इज समथिंग कॉल्ड टेरेन हॉगिंग इन द सेंस कि दिस इज टेरेन राइट कि कोठी गोटे पहाड़ अछि पर्वत अछि ये सी अछि राइट तो सेठी से माने कोन करिवे पूरा पाखरे जिवे जेमति माने ताऊ कोन कोन कुंडे की जिवा राइट so this is what hugging in the sense like कोलाग्रत right so terrain hugging that is related to एते close proximity रे से माने जिवे कि सरफेस सहित इट्स लाइक कि घसी की जाउछ
Okay, so these missiles can stay under enemy radar to avoid detection. This is very important in case of ballistic and cruise missiles. Hope you understood which can have a more capable, like more possibility of detection, and which doesn't have a possibility of detection. So it was in the news as it's the test conducted in October 2020 had to be aborted due to an unexpected problem. से जो टेस्ट हबार था सेटा को 2020 रे ताकू अबॉर्ट करिया को पड़िला सेति से निर्भय न्यूज रे थिला. You now understood what is the difference between ballistic and what is the difference between basically difference between ballistic and cruise missile. Now बर्तन मु जदी कहबी कारगिल युद्ध एटी पहाड़ अछि, can I launch cruise missile? Yes, sir. No. How can I launch cruise missile? भाई ये तो पूरा पाखरे जीव ना. तो कारगिल युद्ध तो बड़रे हबो ना तो सी तो ताको एनिमी तो पाखरे थिबे ना. ना ना मु कहूची बर्तन मझिरे पहाड़ पळे आसिलानी. तो एठी तो मते गोटे बालिस्टिक भलिया ही गोटे दबा को पड़िबो ना गोटे रेंज भलिया. Yes, sir. मु कहूची एठी एनिमी नाहंती, एनिमी एपटे अछंती, एपटे इंडियन आर्मी एपटे पाकिस्तान आर्मी. तो मते जदी एपटे टारगेट करियार अछि ऑब्वियसली मु क्रूज मिसाइल तो यूज करबिनी. गले भाई एई पटे ही ब्लास्ट हो, राइट. आ एमिति न कि सी एमिति चलिबो. ओके, से भलिया पॉसिबिलिटी नाही. इट विल गो स्ट्रेट ओनली बट वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ओके, चलो. Yes, sir. Next, coming to this, I want to just explain these three things called ramjet, scramjet and turbojet. So turbojet is very simpler, like turbo fan जोटा मो कहली कि एरोप्लेन रे हमें यूज करछे. Then coming to the second one, एठी कोन होची देखो, if you see this aeroplane वाला भाबिनियो एटा एरोप्लेन एगुडा होची ता फैन गुडा. ओके, तो ए फैन कोन कला इनटेक कला एयर आसिला and air came in subsonic speed, means the speed of the air जो speed रे से आसुचंदी sound to केते less than 1, correct? No, less than 1 mach से स्पीड रे आसीबे. बट एठी एग्जॉस्ट हबो, एग्जॉस्ट हेले एमाने देबे कोन ना गोटे सोनिक सुपरसोनिक स्पीड गोटे ताकू मिलिबो बेसिकली जोटा कि मोर देन स्पीड ऑफ एयर बी सॉरी स्पीड ऑफ साउंड भी जीवो. सो बेसिकली कोन होची ना एठी इनटेक कला एयर, फॉरगेट अबाउट दिस सबसोनिक. फर्स्ट इनटेक कला एयर, एठी कंप्रेसर हैला, कंप्रेसर हेलवाला परे एठी टरबाइन हैला, देन एठी जो टरबाइन एठी परतन कोन हैला जो कंप्रेशन हैला सेईटा ही सेईठू जो अमाउंट रो तुमको मिलिबो कोन ना ऑक्सीजन. बिकॉज हमको मैक्सिमम ऑक्सीजन दरकार, मैक्सिमम ऑक्सीजन सेति बेला दरकार हो जतल तमे कंप्रेस कर दबो. एतिकी मात्रा रो एयर नउतला सेतिरे पांचटा मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन थिले, किंतु जदि मु आको कंप्रेस कर दे कि एतिकी मात्रा कर देबी देन एथिरे 1 2 3 4 5 6 टा आसीगला. तो प्रति थिरे मु कंप्रेस करली जो प्रति थिरे 5 5 टा लागे. दैट मींस सेम अमाउंट रे माने सेम जदि मु एयर नेबी मते केतेटा मिली जो बर्तन ऑक्सीजन 30 टा, राइट. 30 टा मॉलिक्यूल जोठी आगुर 5 टा मिलुला बर्तन मु 30 टा मिली परिबो जोठी पे मु कंप्रेशन करली. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंप्रेशन चैम्बर. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कम्बशन चैम्बर जोथिरे ऑक्सीजन यूटिलाइज हे जिवो. कम्बशन हैला परे जो छाड़ीबो एयर, राइट, जो धुआंटा दैट इज लाइक एक्सपेंशन because we have a nozzle there, that's what we call as exhaust. Is that clear? This is related to turbo fan wala concept जोथिरे फैन अछि. Hope it is clear. Okay, फैन रो काम कोन ना कंप्रेशन करिया पे. Okay, now जदि तमे रामजेट देखिबो, रामजेट इज लाइक इट डजंट हैव फैन. आगा पाखरे फैन नै. देन तम फर्स्ट क्वेश्चन कि ताले ये कंप्रेशन केमति करिवो. तो कंप्रेशन एथि पई हबो बिकॉज़ एते स्पीड रे जाए जोथि पई तार जो आगो हेड पोर्शन ता अछि ना से हेड पोर्शन ही एयर को कंप्रेस कर दबो. बुझियला एते फास्ट जाए कि हेड पोर्शन ही एयर को कंप्रेस कर दबो. सो दिस इज द इनटेक ऑफ एयर and this intake will come in subsonic speed and combustion हैला पर जो एग्जॉस्ट हबो से एग्जॉस्ट ताकू गोटे सुपरसोनिक स्पीड दबो. इज दैट क्लियर? नॉर्मल जो एयर आसिला एयर रो इंटेक कोन हैला ना सबसोनिक स्पीड. कंबर्सन हैला पर बहुत जोर रे धुआं छाड़िबो. जेति की मात्रा रे आसिला ताठू अधिक स्पीड रे धुआं छाड़िबो. ताठू अधिक स्पीड रे धुआं छाड़िले ही ना से आगु को आगु बढ़िबो. हां कि नै? नहले आपको जे जाई परिबोनी से कथा होछ. जदी से कम एठी भाबिनियो 1 मैक रे नॉट 1 मैक भाबिनियो 3 मैक रे आसिला कोन एयर इंटेक कला एंड भाबिनियो एठू धुआं छाडुची 2 मैक रे आगु किन जीबो से आगरे तो ये तो ताको फोर्स दबो कि भाई 3 मैक रे तू पताना आकु जिबा को पड़िबो निहादी 4 मैक रे, करेक्ट नो? ताहाले 3 मैक रे जो एयर आसुची ताको पेनिट्रेट करके आहुरी आ पाखरे ए डायरेक्शन रे 1 मैक रो स्पीड अछि जोथि भाई से आगु को जीवो. किंतु जना पड़ला कि 2 मैक रो धुआं छाडुची तो आकु एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? तोली दबो ताकू. हां, तो ये ताकु को जाई ही परिबोनी, ये ताकु ठेली ठेली पछु को नबो, राइट? So if it is supersonic speed of air is going to intake, that means here it has to be hypersonic speed. ताको hypersonic दरकार.
देन एठी हाइपरसोनिक रो एआर ही आसीबो बुझियोजी हाइपरसोनिक रो एआर ही आसीबो तो आठू जति की एआर आसीबो हाइपरसोनिक रो ताठू अधिक स्पीड होतबा दरकार सो इट इज कॉल्ड scramjet so there is something called turbojet that is called turbofan there is something called ramjet and there is something called scramjet the scramjet is see ramjet scramjet scramjet basically scramjet this is what we call supersonic ramjet is that clear supersonic ramjet turbofan it is simple correct जोटा हमें एरोप्लेन वगैरह यूज करते हैं ramjet it will go in basically supersonic speed okay it will try to go in supersonic speed means subsonic ro jodi air intake kala supersonic speed re ye jibo jodi supersonic speed ro air intake kala that is what we called SC ramjet supersonic speed ro air intake but speed ye kothre jibo hypersonic re clear okay so this is what air breathable engine will use atmospheric oxygen so the space technology we talk about propellant जोड़ा मैं already discuss करी सारी चीज liquid hydrogen it has a fuel liquid oxygen it is to oxidize right oxidizer so in space air pressure is less that's why the air molecule space they are very space apart जो थी oxygen हमको बहुत कम मिले जो थी हमें कथा हला कोन ना ता पई हमें either use करबा turbo fan जोटा कि होछ गोटे rotary fan then तार next version ramjet there is no turbo fan no rotary fan but this जो warhead अछि तार जो head टा अछि this forward movement will compress the air एटा भाबी नियो जदी तमरा air ए forward movement ये एते fast जाउची कि air टा को से compress करि करि okay then this is what we call subsonic speed रे ये जीवो that means sorry subsonic speed रे air आसीबो and ये supersonic speed रे जीवो then supersonic ramjet रो speed कोन जदी मु कहबी ramjet रो speed supersonic clear सबसोनिक स्पीड रे एयर इनटेक सुपरसोनिक स्पीड रे आगु को से जीवो स्क्रैमजेट रे कांसेप्ट कोन ना इफ दिस इज द वारहेड तो एठी जो एयर रो इनटेक हबो दैट इज इन सुपरसोनिक मोड बट स्पीड ताको मिलिबो हाइपरसोनिक so scramjet like ramjet works in supersonic conversion hypersonic speed and there is something called dual mode ramjet means सेतिरे टर्बोफैन वाले भी बिहेव करबो एंड ताकू सुपरसोनिक स्पीड रे से आगु को मूवमेंट भी करूथबो so this is what we call dual mode ramjet a type of jet machine where a ramjet transfer into scramjet over mach 4 to 8 range then it can efficiently work in subsonic and supersonic speed basically ramjet generally सेटा को स्पीड रे काम करे सुपरसोनिक स्पीड करेक्ट नो जदी से हाइपरसोनिक सुपरसोनिक सबसोनिक सब स्पीड रे काम कला ताकू हमें कहि दो जे डुअल मोड ramjet is that clear yeah I think we will conclude here the next we will try to talk about brahmos and then something saurya carrier cruise missiles other missions akash and anti-tank missiles okay then we will talk about submarines hope it is clear right at least ballistic missiles cruise missile there should not be any doubt so if the question will be like what is brahmos what is nirbhaya what is prithvi agni sagarika सी आगुरु एगुडा कोन थिला मोर मन अछि लास्ट टाइम जेतले प्रीलिम पूर्व एगुडा त मु सेतले पढि नथिले एगुडा रिसेंटली मु पढिली तो आगुरु मु जेगुडा एगुडा पढ नथिला सेतले घोसिया को पढुला कि पृथ्वी 1 एटा एते किलोमीटर सेते किलोमीटर राइट से एठी फायर हो बट एते डिटेलली जणा रहउ नथिला बट at least that's what see the first thing whenever you will try to study any chapter try to understand is to the more depth because in future you won't able to understand into to that depth which you try to understand in the first time तो फर्स्ट टाइम तमे जोति की डेप्थ रे पढिबो सेटा आगु तमे हेति की डेप्थ रे केबे भी पढि परिबो बिकॉज़ जेतेले तमे फ्यूचर रे पढियो ट्राई करबो ना तुमको लागियो कि आ विषय मु जानि छी फॉर एग्जांपल लेट सपोज मु किछि गोटे डेप्थ कवर करि पारलिनी इन फ्यूचर जदी से डेप्थ ता तुमको मिलिबो ना तो ताकू वैल्यू एडिशन पढिया तुमको नबाउ पड़िबो किंतु कथा होची जदी तुमको कहबो कि गोटे निर्भय कथा कहबो ना देन तुम हठात भितर आसी कि भाई निर्भय कथा तुम तो कहना मु तो जानि छी सेटा गोटे क्रूज मिसाइल and this is different from ballistic and सेतले मु कहू सेतले तमर पूरा जदी डेप्थ रे पढितो सब तक रिवाइज हो आ जदी डेप्थ रे पढि नथिबो खाली जो जानथिबो भाई क्रूज मिसाइल देन क्वेश्चन जदी पळे आसिला कि निर्भया आउ आसी गला कि ballistic मिसाइल गोटे दे देला अग्नि कोउटा डिटेक्ट हेई परिबो देन सेठी ही तम रहिजो राडार रे कोउटा डिटेक्ट हेई परिबो कि जदी जेमति मु गोटे क्वेश्चन देली ना कि कारगिल वार
गोटे पहाड़ अच्छी एनिमी पहाड़ सेपटे अच्छी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज वन काइंड अदर काइंड ऑफ मिसाइल जोटा कि 90 डिग्री अप जीवो देन 14 किलोमीटर खंडे एमिति ट्रैवल करियो हॉरिजॉन्टली देन 90 डिग्री डाउन करियो so generally those kind of missiles will be used during this Kargil kind of war okay not exactly ballistic basically what I told 90 डिग्री ऊपर को गला 14 किलोमीटर horizontally travel then 90 degree down okay this is what we are going to try to talk about I think that will be covered here Let me see. BrahMos ray, vertical deep dive version. Okay, this is how it will look like 90 degree up, horizontal, then vertical down. Okay, anyway, so you understood, right? Chalo, thank you everyone.